That was the last straw. Bible I spoke. Beautiful. This is great to be together, huh? A big service. So, what we're going to do from now on, the next, well, just go on and on, is we're going to do some translation at the midweek service. And the reason for that is we have these 20 preachers, missionary trainees in Versailles. And we'd like them. Are you okay? Yeah. And we would love them. In 4 years' time, they will be going out on the mission field. And who knows how these messages will encourage them. बुधवार की सभा में आपसे हम हिंदी में ट्रांसलेशन होगी बिकॉज आप लोग यहाँ पे हैं और इन संदेशों को सुनने के बाद आपके जीवन में जो होगा और जब आप मिशन फील्ड पे जाओगे तो ये संदेश आपके पास वापस आप सोचोगे इनके बारे में और क्या आपके जीवन में बदलाव लाएंगे उसके लिए. So don't mind the translation. Go ahead. Okay. What we do is we'll just do a sentence and then you preach and then we'll go back. Is that okay? That's fine. All right. Okay, let's turn with us to turn the Bibles to Philippians chapter 3. फिलिपियों के तीसरे अध्याय में चलेंगे. फिलिपियों का तीसरा अध्याय. And as we read the scriptures this morning, this evening, जैसे आज शाम को हम वचन पढ़ेंगे. I want you to be just read this with great reverence. और ध्यान लगा के परमेश्वर के बारे में सोच के इन वचनों को पढ़ेंगे. Because I love what Paul is saying here. मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस जो यहाँ पर कह रहा है. He really has found something. और मानो कि यहाँ पे कुछ मिल गया है. And this has become the greatest treasure of his life. और उसके जीवन का एक अनमोल सा हिस्सा बन गया है. खजाना. Philippians chapter 3, we'll read from verse 3. फिलिपियों का तीसरा अध्याय तीसरी पंक्ति से पढ़ना शुरू करेंगे. Why don't you read it in Hindi on your own? Yeah, and I'll just read it in English. और जैसे पास्टर इंग्लिश में Philippians chapter 3, verse 3, we'll read till verse 8. तीसरे अध्याय में तीसरी पंक्ति से आठवीं पंक्ति पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में जैसे वो पढ़ रहे हैं आप उसी समय में हिंदी पढ़ते रहेंगे. For we are the true circumcision who worships in the Spirit of God, and we glory in Jesus Christ, and put no confidence in the flesh. Although I myself might have confidence even in the flesh. If anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised the 8th day, the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, the Hebrew of Hebrews, as to the law of Pharisee, as to zeal or persecuted of the church, as to righteousness which is in the law, I was found blameless. But whatever things were gained to me, that I counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, that I may gain Jesus. He's writing this from a prison cell in Rome. और पौलुस ये जो लिखा है वो एक कारगर से प्रिजन से लिख रहा है. And I want you tonight to consider the passion of the Apostle Paul. और जो उसकी उत्तेजना है इस समय में आप देखिए जो पौलुस की है. And ask yourself this question. और अपने आप से ये सवाल पूछिए. What caused this man's passion? इसका इतनी जोश क्यों था इस इंसान में? And also, what happens when Christ becomes our greatest treasure? और क्या होता है जब परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा खजाना बन जाता है? In Philippians chapter 1, verse 12. फिलिपियों के 1 और 12 में Paul is in prison. पौलुस जेल में है. And he writes these words. और ये पंक्तियां लिख रहे हैं 12वीं पंक्ति. 12 to 14. 12 से 14 पढ़ सकते हैं. Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel, so that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard and to everyone else, and that most of the brethren, trusting in the Lord because of my imprisonment,
have far more courage to speak the word of God without fear. Tonight, आज शाम I want to speak about this subject. इस बारे में बात करना चाहता What हूँ happens when Jesus becomes our greatest treasure? क्या होता है जब मसीह यीशु मेरा सबसे बड़ा खजाना बन जाता है। Before I begin, I want to tell you a funny story. शुरू करने से पहले एक कहानी कहना चाहूँगा। A little boy went up to his pastor after a church service, एक छोटा लड़का अपने पास्टर के पास गया सर्विस के बाद, and he said to his pastor, और उसने अपने पास्टर से कहा, he said, "Pastor, when I grow up, I want to give you some money." उसने कहा, पास्टर जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो तब मैं तुझे कुछ पैसे देना चाहूँगा। So the pastor said, "Well, thank you. तो पास्टर ने कहा, धन्यवाद, But why?" लेकिन क्यों? He says, "Because my daddy said you're the poorest preacher we've ever had." Can you translate that? प्रचार करने में मैं कहता मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम सबसे गरीब प्रचारक हो। प्रचारक इन द सेंस प्रचार करने के समय में सबसे। Okay, some of the jokes are going to fall flat. That's okay. We'll explain it later. All right. So think of this tonight. सोचिए इस चीज के बारे में। And I want us to think about our own lives. और मैं चाहता हूँ कि हम अपने जीवन के बारे में सोचें। Paul came to a place पौलुस एक स्थान पर पहुंचा where he realized जहाँ पे उसको एहसास हुआ that in his life everything was Jesus. कि उसको यह एहसास हुआ कि उसके जीवन में हर एक चीज And he came to a सबसे महत्वपूर्ण place यीशु है। where he said, "I can put no confidence in my flesh." और वो एक स्थान पर से पहुंचा जहाँ पे वो कहता है कि मैं अपने शरीर पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। Paul had, before he came to Jesus, यीशु के पास आने से पहले he was very proud of his achievements. उसने जो कार्य अपने जीवन में किए थे उसके लिए बहुत घमंड था उसको। He was a Pharisee. एक फरीसी था वो। There are many people today, और आज बहुत लोग हैं and they like to tell people what they've done. और उनको अच्छा लगता है लोगों को कहने के लिए कि उन्होंने क्या किया अपने जीवन में। If you go to their homes, अगर आप उनके घर जाओ, they might have a trophy chest, उनके यहाँ जैसे एक ट्रॉफी लगी होगी and सब, they will have all the medals they earned in sports. और खेलकूद में जो उनको मेडल मिले हैं, पदक मिले हैं, वो शायद वहाँ लगे They होंगे। will tell you what their academic qualifications वो are. कहेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी अच्छी थी उसके बारे में, I am an engineer. कि मैं एक इंजीनियर हूँ, I am a doctor. मैं एक डॉक्टर हूँ, I am a physician. मैं एक डॉक्टर हूँ, I am whatever that might be. तो चाहे मैं कुछ भी हूँ, And it's not bad. और ये बुरा नहीं है, Well, let me tell you something. लेकिन एक ही चीज मैं कहूँगा, Paul had many achievements. पौलुस ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए थे, He was in the religious field. और धार्मिक क्षेत्र में। And if you could list Paul's achievements, और अगर पौलुस के जो उसने कार्य किए उसकी अगर एक लिस्ट बना it लो, was a big trophy list. तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। If you had an award for Paul, अगर आप कोई अवार्ड देना चाहो पॉल a को, Jewish award, यहूदियों का, he would be the #1 progressive Jew in Israel at that time. तो सबसे यहूदियों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला उसका नाम आएगा। He tells us in Galatians chapter 1 that I was progressing far beyond my contemporaries. और गलातियों के पहले उसमें लिखा हुआ है कि मेरे सही लोग जो मेरे साथ थे उनसे कहीं आगे मैं बढ़ चुका And था। so Paul is relating इसलिए पौलुस कह रहा how है he thought 30 years ago. किस तरह से वो सोचता था 30 वर्ष पहले, He says, listen to my achievements. और वो कहता है सुनो मेरे बारे में मैंने क्या किया। I was circumcised on the 8th day into the nation of Israel. खतना हुई थी मेरी 8वें दिन इजराइल के देश में। The circumcision of a Jew एक खतना यहूदी की was a very important thing to them. बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उनके It was जीवन में। it was a badge और जैसे मानो एक सिक्का था, बैज था that उनका, they belonged to the most holy nation, कि जैसे सबसे पवित्र देश का निवासी है वो Israel. इजराइल, That was important to them. और वो बहुत जरूरी था उनके He लिए। said, I was of the tribe of Benjamin. कि बेंजामिन के गोत्र से था मैं। Now, twice Paul mentions that. 2 बार पौलुस उसके बारे में कहता है। The second time he mentions it in Romans 11:1. दूसरी बार रोमियो के 11:1 में उन्हें कहता है। Why is the tribe of Benjamin so important? बेंजामिन का गोत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Number one, पहली चीज, Benjamin was the tribe from which the first king of Israel came from. बेंजामिन वो गोत्र था जहाँ से इजराइल का सबसे पहला राजा आया था, Saul. सॉल। Benjamin was also the only son who was born out of the 12 sons of Israel in the land of promise. और बेंजामिन वो एकमात्र पुत्र था जो इजराइल के देश में पैदा हुआ था। He was the youngest son, सबसे छोटा पुत्र था। and he was born. And when he was born, his mom died. और जब वो पैदा हुआ तो उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। He was called the son of my right hand. उसका नाम का मतलब है पुत्र मेरे सीधे हाथ पर। When the nations of Israel went to war, जब इजराइल के देश लड़ाई के लिए जाते, Benjamin had the #1 place of honor. बेंजामिन को सबसे पहले ऊंचा उठाया जाता They था। were the tribe that was placed #1.
बेंजामिन वो गोत्र था जिसको सबसे आगे The रखा tribes of था। Israel would say, "After ye, Benjamin." और इस्राएल के गोत्र कहते थे तुम्हारे पीछे हम चलेंगे बेंजामिन। Paul was very proud of that. पौलुस उसके बारे में बहुत घमंड I am था of the tribe of वो Benjamin, कहता है बेंजामिन के गोत्र से मैं हूँ, a Hebrew of Hebrews. इब्रानियों का इब्रानी। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It means that there were many kinds of Jews. इसका मतलब है कि बहुत तरह के यहूदी थे। When the Jews were dispersed in the diaspora, when they were dispersed at Babylon, in the बाबिलोन में nations, जब उन फैल गए थे यहूदी, some of the Jews that had traveled far away had forgotten their native Hebrew language. और बहुत सारे यहूदी जब दूर चले गए थे तो उनकी जो भाषा है इब्रानी वो भूल चुके थे। They were called Hellenistic Jews उनको हेलेनिस्टिक जू कहा जाता था because they were influenced by the Greek culture. क्योंकि यूनानी कल्चर से उनको बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था। But Paul was not. लेकिन पौलुस ऐसा Even नहीं though he था। lived far away in Tarsus from Jerusalem, यरूशलेम से दूर टार्सस में रहने के बावजूद भी Paul remembered his Hebrew language. पौलुस अपनी इब्रानी भाषा को याद रखता था। He knew the Hebrew language. वो इब्रानी भाषा को जानता He था। loved his people. वो अपने लोगों से प्रेम He करता says, था। I was a Pharisee. कहता था मैं फैरिसी हूँ। I was not just a devout Jew. सिर्फ एक अच्छा यहूदी ही नहीं, I was one of the separated ones. मैं उनमें जो हटाए गए हैं अलग I had से beard. दाढ़ी नहीं। I had kept everything else, kept all normal duties aside so that I would fulfill the Mosaic law. मैंने सारे अपने कार्य को अलग कर दिया था ताकि मैं मूसा की जो लॉ है उसको पूरा कर सकूं। Paul had every reason to be proud. और पौलुस के पास हर एक कारण था घमंड होने के He लिए। was the most important, most progressive. Everybody knew who Saul of Tarsus was. सब जानते थे कि सॉल टार्सस का कौन है। Remember one day, और एक दिन we know the story. हम कहानी जानते हैं, Riding on the crest of this wonderful fame that he has, और जो उसका नाम था उसके ऊपर जब वो आगे बढ़ रहा था, he's traveling to Jerusalem, वो यरूशलेम जा रहा है, to Damascus. दमिश्क की ओर, And then outside the city, और शहर के बाहर he meets the Lord Jesus Christ. वो यीशु मसीह से मिलता है। What an encounter. और क्या मिलने का समय And in है। that moment, और उस समय में Paul, we know, was hit by a blinding light. एक ऐसी अंधा बना देने वाली रोशनी उसको And he मिली, heard this voice, और उसने ये आवाज सुनी, the sound of many Niagara Falls. और जैसे नायग्रा फॉल बहुत सारे पानी झरनों के Saul, समान, Saul, सॉल सॉल why are you persecuting me? मुझे क्यों सताव कर रहा है। And in that moment, और उस क्षण में Paul found out something पौलुस को ऐसा कुछ मिला that he had never known before. जिसने कभी पहले जाना नहीं First था। thing he knew पहली चीज उसने was जानी, this Jesus of Nazareth, whom he was persecuting, was alive. यीशु मसीह नजरी का जो है वो जिंदा है। This was a shock to Paul. और इससे जैसे वो चौंक गया था, वो Jesus यीशु of Nazareth, नजरी का he really is the Messiah. वो सच में मसीहा है, He is the Lord. वो परमेश्वर है। That was amazing. और ये बहुत अद्भुत है उसके The लिए। second thing he found out on the road of दूसरी Damascus चीज जो उसको मिली इस सड़क पर, was Jesus was gracious. यीशु मसीह अनुग्रही है। He still loved Paul. वो अभी भी पौलुस से प्यार करता है। The third thing he found out तीसरी चीज उसको पता जो चली was all that he was pursuing, कि वो जिन चीजों के पीछे दौड़ रहा था, all his human achievements, जो उसकी इंसानियत में जो जिन चीजों के पीछे दौड़ रहा था, they were worthless. उनका कुछ मूल्य नहीं था। They were wood, hay, and stubble जैसे लकड़ी और घास के समान थे in the light of eternity. आने वाले समय के। Wow. Paul had a discovery. पौल ने कुछ जाना उस दिन, And on that road of Damascus, और उस दमिश्क की सड़क पर he found out what you and I have found out उसने वो पाया जो आपने और मैंने पाया है when we got saved, जब हम उद्धार में आए, that Jesus was our greatest treasure. कि यीशु मसीह हमसे हमारा सबसे बड़ा खजाना है। We हमें found out that. हमने वो जाना, And that's such a beautiful thing to find out. और वो कितनी खूबसूरत चीज है जानने And के I लिए। love what Paul says. और मुझे अच्छा लगता है पौलुस ने क्या कहा। I'll read Philippians chapter 3 again. अगर आप फिलिपियों का तीसरा अध्याय फिर He से पढ़ो, says in verse 8, 8वीं पंक्ति में वो कहता है, no, verse 7, 7वीं पंक्ति में कहता है, but, परंतु 30 years later he's writing this epistle. 30 वर्षों के बाद ये पत्र लिख रहा है, And he's grown to know this wonderful Jesus. और वो जान चुका है अभी यीशु को। He says, but कहता है लेकिन परंतु whatever things were gained to me, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, those human achievements, वो जो सब कुछ उसने अपनी इंसानियत में किया, those things I have counted as loss for the sake of Christ. उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया है। He said, listen, all that when I looked at all my life, वो कह रहा है कि जब मैं अपने पूरे जीवन को देखता हूँ, one big zero एक बहुत बड़ा जीरो है, शून्य है, to knowing Jesus. जब मैं यीशु को जानने लगा। And he doesn't stop there. और वहाँ पे रुकता नहीं है वो। He says, that's my past. वो कहता है वो मेरा पिछला बीता हुआ समय But है, even now, लेकिन आज भी
as I consider it. जब मैं सोचता हूँ, When I put it all together, जब मैं एक साथ उसको रख देता हूँ, all human achievement, जो भी मैंने अपनी इंसानियत में किया है, all human applause, जो भी लोगों ने मुझे सराहा उस चीज के लिए, he says it's but rubbish. वो सिर्फ जैसे मानो कूड़े के समान है, That I may know Jesus. ताकि मैं यीशु को जान सकूं। What a beautiful thing. कितनी खूबसूरत चीज है, That I may know him. ताकि मैं उसे जान सकूं, Oh, that I may know him. ताकि मैं उसे जान That I सकूं, may know him in the power of his resurrection. ताकि मैं उसे जान सकूं और उसके सामर्थ्य को जो उद्धार का है, That I may fellowship with his sufferings. ताकि उसकी एक मेरी संगति हो सके उसकी Oh, तकलीफें that जो I हुई may हैं, know him. ताकि मैं उसे जान सकूं। Not that I have achieved yet, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने अभी तक कुछ पा लिया है, but I'm still pressing on 25 years later लेकिन 25 वर्ष के बाद भी मैं अभी जोर लगा रहा हूँ, to आगे get बढ़ a रहा हूँ hold of this great treasure that I have, कि ये जो बड़ा खजाना है इसको मैं कुछ समेट सकूं, that the world doesn't know इसके about. बारे में संसार को पता नहीं है। And friends, we have found him. और पर लोग दोस्तों हमें वो मिल चुका है वो Is खजाना, Jesus the same way for us और tonight? यीशु हमारे साथ भी वैसा ही है। Do we understand it? क्या हम उसे समझते हैं? Because men and women in the Bible have. क्योंकि बाइबल में जो पुरुष और स्त्री हैं वो समझ चुके हैं। Psalm 73, Asaph found the same truth. भजन संहिता 73 में एसाफ ने वही चीज ढूंढी। In 73 verse 25 and 26, 73 में 25 और 26 Asaph said, एसाफ ने कहा, For who have I in heaven? मेरे पास कौन है स्वर्ग में? Who have I in heaven? कौन है मेरे पास स्वर्ग And में? there is none on this earth और कोई नहीं है इस धरती पर that I desire जिसे मैं चाहता हूँ, but you. लेकिन आप। Amy Carmichael once said, एमी कार्माइकल ने कहा था, she said, Oh God, let me burn for you. उसने कहा, हे परमेश्वर, ताकि मैं आपके लिए जल सकूं। Psalm 104 verse 4 says, भजन संहिता 104 और You 4 में make लिखा your है, angels as messengers, winds, आपने स्वर्गदूतों को जैसे that वायु you की can तरह बनाया fly. है, But you make your messengers as flame of fire, as a flame of लेकिन fire. आप अपने दासों को जैसे एक आग की तरह बनाते हैं। And Amy Carmichael said और this. एमी कार्माइकल ने ये कहा था, She said, Oh God, उसने कहा, हे परमेश्वर, make me a flame of fire for मुझे you. वो आग के गाँव बना दे, She said, make me your fuel, oh God. मेरे को जैसे अपना फ्यूल बना दे। Please, God. परमेश्वर, What a beautiful thing. ये खूबसूरत चीज है। Jim Elliot said, जिम एलियट मिशनरी ने कहा, missionary to the Auca Indians. ऑका इंडियंस में एक मिशनरी थे, He उन्होंने said, कहा, God, it is not a long life that I ask for, उसने कहा, परमेश्वर, एक लंबी जिंदगी में तुझसे नहीं but मांगता give हूं, me a life that's fully lived for you. लेकिन ऐसा एक जीवन दे जो मैं तेरे लिए पूरी तरह से जी सकूं। Wow. कितनी अच्छी बात It है, is so beautiful कितनी खूबसूरत to बात है find Jesus कि हम यीशु को पाते हैं as our treasure. हमारे खजाने की What समान। a beautiful thing. कितनी खूबसूरत चीज है। I penned these words today. मैं ये लिखता हूँ, I don't know why I wrote them. I just wrote them as I thought. और मुझे पता नहीं मैंने क्यों लिखा, लेकिन They're not a मैं सोच poem. रहा था, लेकिन मैंने इसको It's लिखा। not a poem. पोएम नहीं है ये, But I कविता wrote नहीं these है, words as I was thinking about Jesus. लेकिन ये मैंने कुछ शब्द लिखे जब मैं यीशु के बारे में What सोच will रहा it था। be? What will it be like for me to wake up one sweet morning किस तरह से होगा मेरे लिए कि एक दिन में जब सुबह उठूं and see your precious face, और Lord आपका Jesus? अमूल्य चेहरा देखूं यीशु। What will it be like to bow before your throne और कैसा होगा जब मैं आपके सिंहासन के सामने झुकूंगा and shout glory, 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 और चिल्लाऊंगा, महिमा 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 हो तेरी। and hear the words, और ये वचन सुन, ये शब्द सुनूंगा तेरे, my son, मेरे पुत्र, I love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। What will it be like when you take my hand and place me before God the Father? और कैसा होगा जब आप मेरा हाथ लोगे और परमेश्वर पिता के सामने मुझे रखोगे। What will it be like to walk through the streets of golden heaven and converse together? किस तरह से होगा जब हम उस सोने की सड़क पर चलेंगे स्वर्ग में और एक दूसरे से बात करेंगे। What will it be like to sit at a table with you, my Lord, and eat and drink with your family? और कैसा होगा परमेश्वर जब हम एक दिन आसपास सामने सामने बैठ के खाएंगे पिएंगे और परिवार के संग बातें करेंगे। What will it be like to realize that your love for me was eternal? और कैसा होगा जब मैं देखूंगा कि तेरा प्रेम मेरे लिए And अनंत yes, काल के your लिए plan था for me was perfect. और आपकी योजना मेरे लिए हाँ सही थी। Heaven will be called home. Heaven will be called home स्वर्ग मेरे लिए घर कहलाएगा because you're the center of it. क्योंकि आप उसके बीच में। In that day, Lord, और उस दिन में I परमेश्वर will find out मैं जान लूंगा that you are my greatest treasure, कि आप मेरे सबसे बड़े खजाने, all of my heart's desire. मेरे सारे हृदय की ख्वाहिश। Amen. आमीन। And I think about that tonight. और उसके बारे में जैसे आज मैं शाम को Oh, friends. सोचता हूँ मेरे दोस्तों, We are on the winning side. हम उस
तरफ है जहाँ पे जीत हो चुकी है। Nothing this world can offer us इस संसार में हमें कोई ऐसी चीज नहीं दे can सकता compare है with who Jesus is. जिसकी हम तुलना कर सके जो We यीशु may not है। have the biggest homes. हमारे पास शायद सबसे बड़ा We घर may ना not हो have all the fancy cars. और सबसे अच्छी गाड़ियां ना हो We may हमारे not पास। have all the things this world gives us. जो संसार देता है वो सारी चीजें हमारे पास शायद ना हो, But it's trinkets. यदि कुछ भी नहीं है। It's plastic, as someone said recently. प्लास्टिक कूड़े के समान है, It's bangles. चूड़ियों के समान है। It's nothing compared to what we have in Christ. कुछ नहीं है उसकी तुलना में जो हमारे पास I है यीशु promise you मसीह में। tonight, मैं आपसे कहता हूँ, I promise you that मैं आपसे tonight, वचन कर वादा you will करता not हूँ, be 5 minutes in heaven आप स्वर्ग में 5 मिनट ऐसा नहीं होगा कि आप before you हो, realize what a treasure Jesus Christ is. तब आपको एहसास हो जाएगा कि क्या ये खजाना है यीशु मसीह का। Let's go on to know Him. आगे बढ़ते रहें, उसको Let's जानते be रहें encouraged in our race. और प्रोत्साहित हों, हमें Let's दौड़ में walk by faith. और विश्वास से चलें। If Paul could say 30 years after he became a believer, और पौलुस अगर ये कह सकता है 30 वर्ष विश्वासी होने के बाद, that I may know Him more. ताकि मैं इसके और करीब से जान Oh, that tells you a सकूं, lot. इससे आपको बहुत समझना चाहिए। If for Him Jesus was everything. अगर उसके लिए यीशु मसीह सब कुछ था, You see, witnessing और ये जैसे सुसमाचार is प्रचार just करना speaking है, about somebody you love. ये उसके बारे में है कि हम उसके बारे में बात करते हैं जिससे When प्रेम Christ करते becomes हैं। your greatest treasure, जब परमेश्वर आपका सबसे बड़ा खजाना बन Think जाता about है, it. उसके बारे में सोचो, then we automatically speak of what we love. तो अपने आप ही हम उसके बारे में बात करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। Turn with me to Song of Solomon, और श्रेष्ठ गीत में चलिए just for a moment. कुछ क्षणों के लिए, I want to read to you a couple of passages I was thinking about. और कुछ वचन पढ़ेंगे वहां से। In Song of Solomon, श्रेष्ठ गीत में there's a woman called the Shulamite woman, शुलमी स्त्री है वहां पर, and she is after her lover, a bridegroom, Solomon. और अपने प्रेमी दूल्हे सुलेमान के पीछे है वो, And it's a beautiful picture of Jesus and His church. और एक खूबसूरत तस्वीर है यीशु मसीह के उसकी कलीसिया की। But think about it, in Song of Solomon chapter 3, और श्रेष्ठ के 3 अध्याय में she is so in love with her bridegroom वो इतना प्रेम करती है अपने दूल्हे से that she's so in love that she makes all her friends curious about him. वो इतना प्रेम करती है कि उसके सारे मित्र पूछने लग जाते हैं कि क्या I है। love these verses. और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है In पंक्तियां। Song of Solomon 3 verse 1, श्रेष्ठ की 3 अध्याय पहली she पंक्ति, says, on my bed night after night I sought him, रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राणप्रिय को ढूंढती रही, whom my soul loves. मैं उसे ढूंढती तो रही पर I sought him but did not find him. मैंने उसको ढूंढती रही पर उसे पाए नहीं। I must arise now and go about the city in the streets and its squares. मैं अब उठकर नगर में और सड़कों पे चौकों में घूमकर I must seek him whom my soul loves. अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। I sought him but did not find him. मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे पाए नहीं। The watchmen who make the rounds of the city found me. पहरुई के नगर में घूमते हुए मुझे मिले And I said, have you seen him whom my soul loves? और मैंने उनसे पूछा क्या तुम मेरे प्राण प्रिय को देखा है? Scarcely had I left them मुझको उनके पास से आगे when I found थोड़ी him कि मैंने उस प्राण प्रिय whom मिल my गया, soul loves. मैंने उसको पकड़ लिया, I held on to him मैं उसको पकड़ लिया and would not let him go और उसको जाने न दिया until I brought him to my mother's house. जब तक मैं उसको अपनी माता के घर नहीं Think लाया। about that. सोचो उसके बारे में, And because she's talking so beautifully about Jesus, about this her lover, क्योंकि इतनी खूबसूरता से वो बात कर रही है अपने प्रेमी के बारे में। they're intrigued. तो सो पूछना And in chapter 5, verse 9, और 5वें अध्याय में they ask की her 9वीं this पंक्ति question. में और उन्होंने उसको ये सवाल पूछा They say in verse 9, 9वीं पंक्ति में, what kind of beloved is your beloved? तो स्त्री ने उसको पूछा तेरा प्रेमी किस Almost- बात के है? Most beautiful among women. What kind of beloved is your beloved? This I ask you. 9वीं पंक्ति को पढ़ लेंगे। In verse 10, 10वीं पंक्ति, he says, my beloved is dazzling and ruddy, उसने कहा मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है outstanding among 10,000. और 10,000 में उत्तम है। His locks are like, his head is like gold, pure gold. उसका सिर चोखा कुंदन है, His locks are like clusters of dates. उसकी लटकती हुई लहटें कौवा के Verse समान 12, his हैं। eyes are like doves, उसकी आंखें समुद्रों के समान है जो beside streams of water. वे दूध में नहाकर नदी के किनारे थे। Verse 13, his cheeks are like a bed of balsam. उसके गाल फूलों की फुलवारी के His पुष्पान, lips are like lilies उसके dripping with होंठ liquid सोसन फूल wine. के जिनके पिघलते हैं। This is my beloved. ये मेरा प्रेमी है, This is my friend. ये मेरा मित्र है। And they say, और उन्होंने कहा in verse chapter 6,
छठी अध्याय Where में has your beloved gone? उसने कहा कहाँ चला गया तेरा Oh, प्रेमी? most beautiful among women. स्त्रियों में सबसे Where has खूबसूरत your beloved turned? कहाँ चला गया तेरा प्रेमी? That we may seek him with you. ताकि हम उसकी खोज कर सकें तेरे साथ। See her devotion जो उसकी लगन थी उसके in पीछे talking about her lover, अपने प्रेमी के लिए, about the one who loved her. जो उससे प्रेम It करता was था, so incredible वो इतना अच्छा that था everyone in the city कि हर एक शहर में जो was था saying, who is this person you कि love कौन so है ये much? प्रेमी जिससे तू इतना प्रेम करती है? Who is this person you love so much? कौन है जिससे तू इतना प्रेम Tell करती us है? where we might find him too. कहा कि हमको भी बता जाके हम That is इसको what खोज it means to सकें। be a contagious Christian. और इसका मतलब है एक अच्छा विश्वासी, That's what it मजबूत means to have विश्वासी। a love for God and a passion for Jesus that just is contagious. और इसका यही मतलब है जिस तरह से हमें उत्तेजित है और हमारे अंदर जोश है यीशु मसीह के लिए कि दूसरे देख के हम उसको जानना चाहते When हैं। Christ becomes your greatest treasure, जब यीशु आपका सबसे अच्छा खजाना बन जाता है, this is what happens. यही होता है आपके जीवन Soul में। winning and witnessing to people becomes something very spontaneous. और सुसमाचार प्रचार करना, लोगों से यीशु के बारे में बात करना एकदम अलग ही हो जाता है, एकदम आसान हो जाता And है। you keep telling people और आप लोगों से कहते रहते हो that what you're looking for is Jesus. कि आप जिसको देख रहे हो वो यीशु है। And then she says this, और फिर वो कहती है, do you know where my beloved is gone? कहते हैं जानते हैं मेरी He's gone down to his garden, वो अपने बगीचे में गया है, to the beds of balsam. To the beds, verse 2, chapter 6, verse 2. श्रेष्ठ की दूसरे छठे अध्याय दूसरी पंक्ति में, To pasture his flock in the gardens. कि भेड़ बकरी चराए और सरसून फूल बटोरे। I am my beloved, मैं अपने प्रेमी हूँ and my beloved is mine. और मेरा प्रेमी मेरा है। He who pastures his flock वे अपनी भेड़ बकरियां सरसून फूलों among the lilies. सरसून फूलों के बीच You say, चराता where है। is your beloved? तो कहा कहाँ है आपका प्रेमी? And you say, he has gone down to his garden. वो कहा अपने बगीचे में गया है वो। What is his garden in symbolic language, typical language here? और एक चिन्ह के समान से क्या है वो? It is his church. उसका कलीसिया। He is pasturing his flock वो अपने भेड़ बकरियों जैसे हमें among चरा the रहा है lilies. सरसों के And फूलों they के say, बीच। where will I find him? और कहे कहाँ मुझे And मिलेगा वो? you say, come to church. और कहे वो कलीसिया आओ, चर्च You में find आओ, him in Mayor's Hall. मेयर्स हॉल में मिलेगा One of the आपको। places he is in is somewhere where the churches are meeting. और उनमें से कुछ स्थानों में है जहाँ पर कलीसिया में We'll वहाँ find पे him in मिलेगा Bonanza आपको। Arcade. बुरांस आर्केड में मिलेगा We'll find आपको। him where he's meeting and ministering to his church. और वहीं पर मिलेगा जहाँ पे अपनी सेवकाई कर अपने कलीसिया के साथ। Come, आओ come, he's more beautiful than 10,000. आओ, 10,000 से भी ज्यादा खूबसूरत So है, beautiful. कितना खूबसूरत है। This was Paul. ये पौलुस था। And I was just thinking about Paul. और मैं पौल के बारे में And just सोच being रहा in था। Nepal, being in Nepal was amazing. और नेपाल में जाना अच्छा था। And to see the excitement जो उत्तेजना वहाँ पे of what's जोश going है, on in the mountains. जो पहाड़ों पे जो चल रहा There's है, simple people with simple faith. साधारण लोग और साधारण Just bringing विश्वास people to Jesus. लोगों को भी यीशु के पास Because लाए, there's no distractions. क्योंकि कोई ध्यान भटकने की कोई There's चीज नहीं nothing है, else to distract them. कोई चीज से उनका ध्यान भटकता So नहीं है। Jesus is found and Jesus is their greatest treasure. और यीशु पाते हैं और यीशु उनका सबसे बड़ा खजाना बन जाता And है। this is Paul. और ये पौलुस है। In Acts 16, प्रेरितों के 16वें अध्याय we में see what the Philippine church got a chance to see, this contagious man who loved Jesus. और फिलिपियों के कलीसिया को इंसान देखने मिला जो यीशु के पीछे एकदम जोर से था। Think about it. सोचिए उसके बारे In में। Acts 16, प्रेरितों के 16वें Paul अध्याय starts में the Philippine church by the riverside. What a great place to start a church. फिलिपियों का कलीसिया शुरू हुआ नदी के किनारे। Who says a church needs a big building? किसने कहा कि कलीसिया को बहुत बड़ी You बिल्डिंग can की start जरूरत a है? church by the tree side. हमने कलीसिया को पेड़ के साथ भी शुरू कर सकते Ask हैं। the guys in Gujarat. गुजरात जो है उनसे पूछिए, Ask some of the pastors up in the mountains in Nepal. पहाड़ों में जो पैस्टर है उनसे पूछिए। Pastor Rajan went once to preach in a church up in the mountains. और पैस्टर राजा ने एक बार प्रचार करने के कलीसिया And में पहाड़ पर it था came time to sleep in the night. और रात को सोने का समय आया And so he asked the man, where will I sleep? तो उसने कहा कि मैं कहाँ पर सोऊं? And he said, here. उसने कहा यहाँ पे सो जाओ। And he looked there, उसने वहां देखा and there was nothing. और वहां पर कुछ नहीं था। It was just here. उसने कहा सिर्फ यहाँ पर Where you जमीन पर। sleep, you sleep. उसने कहा तुम सो रहे हो, सो जाओ जमीन This पर is सो how जाओ। people live. इस तरह से लोग जीते You हैं। can start a church anywhere. आप कलीसिया कहीं भी शुरू कर Paul सकते went हो। down to the riverside पौलुस नदी के किनारे गया and preached to these wonderful people. और प्रचार किया इन लोगों को। And we know Lydia got saved. और हम जानते हैं लीडिया उद्धार में आई। And just like how we are starting our churches. और जिस तरह से हम अपनी कलीसिया And शुरू कर रहे हैं we're doing the same thing. It's the book of Acts. और वही चीज कर रहे हैं जो प्रेरितों के काम में लिखी है। And a house Bible study started at Lydia's home. अब लीडिया के घर में बाइबल स्टडी शुरू हुई And then Paul is arrested and beaten and thrown
thrown into jail. और फिर पौलुस को पकड़ा गया, मारा गया और डाल दिया गया But do you कारागृह में। hear any depression? लेकिन क्या आपने सुना कोई दुख Do की you कहानी? hear any complaining? क्या सुना आपने कि कोई कंप्लेन कर रहा है? No, sir. कहीं पर भी नहीं, There's no complaining. कहीं पर कंप्लेन नहीं कर रहा है। Around 12 midnight, रात को 12 बजे the prisoners are listening to an orchestra playing. सारे A कैदी सुन little, रहे a little हैं, symphony is starting. सारे कैदी ये गीत गान सुन रहे हैं। It's called a midnight symphony. And they are not in 4-part harmony, they are in 4-part disharmony. और जैसे एक ताल में नहीं लेकिन ऊपर नीचे गा रहे थे, Paul and Silas, पौल और साइलस, here they are. और यहाँ पर वो हैं And they're singing beautiful songs and praise to the Lord. और खूबसूरत गीत गा रहे हैं। That's so beautiful. कितना खूबसूरत What है। is Paul doing? क्या कर रहा है पौल? He just speaks of what is his greatest treasure. वो सिर्फ वो बात कह रहा है जो उसका Oh, do सबसे you बड़ा understand what खजाना I'm है। talking about tonight? समझ रहे हैं आप क्या कहा जा रहा है? Oh boy, Christ is my greatest treasure. यीशु मसीह मेरा सबसे बड़ा खजाना है। Christ is all we need. वो सब कुछ है मेरे लिए। And they're singing the songs. और वो ये गीत गा रहे हैं And रात the को। jailer gets saved. और जेलर उद्धार में आ जाता And है। I love the scene. और मुझे अच्छा लगता है Now, let me दृश्य, tell you one of my favorite scenes there. और ये अच्छा दृश्य लगता है मुझे। It's not preached on often. इसके बारे में बहुत प्रचार नहीं होता, Think of the scene. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है The दृश्य। jailer gets saved. जेलर उद्धार में आता है And Paul now at 2 o'clock in the morning और रात को 2 बजे पौलुस is talking to this person about his greatest treasure. वो उससे उस बात कर रहा है उसके सबसे बड़े खजाने के बारे में। This man has got stripes on his back. उसके कोड़ के निशान है उसके This पीठ पे। man has been beaten. उसको बहुत बुरी तरह पीटा This गया है। man has been flogged and put in jail. उसको कोड़ों से मार के जेल में डाल दिया गया है। But he's talking about the one thing that's important to him. लेकिन वो बात कर रहा है वो एक चीज के बारे में जो उसके लिए बहुत जरूरी है। Jesus is his greatest treasure. यीशु उसका सबसे बड़ा And this खजाना है। jailer finding Jesus his greatest treasure. और जेलर को पता चलता है कि यीशु उसका सबसे बड़ा Man, खजाना it's है। a beautiful verse. और ये बहुत खूबसूरत पंक्ति है। And he spends till late after midnight leading this man to the Lord. और आज रात को 12 के बाद भी बहुत देर तक वो And उद्धार में ला I रहा love the है। next part. और अगला अच्छा And it लगता says है the मुझे। jailer took Paul and Silas and began washing their wounds. और ये अच्छा लगता है लेकिन वो जेलर लेके जाते हैं उनको, उनके जहाँ पे उनको चोट लगी वो धोना शुरू कर देता है। It's not 3 o'clock in the morning, my translation. अब जी मैं अनुवाद कर रहा था तो 3 बजे हैं अभी रात के वहाँ पे। Do you see what happens? देखा क्या हुआ? And then he gets baptized at 4 o'clock in the morning. और फिर उसका 4 बजे बपतिस्मा हो जाता है। What a scene! क्या चित्र है ये? What a night! क्या रात थी वो? Brotherhood experienced. भाईचारा वहाँ पे The दिखा है। jailer is changed so quickly in one night and becomes a man of compassion. और जेलर जो है एक रात में इतनी जल्दी उसके जीवन में बदलाव आ गया और प्रेम का इंसान बन गया। All because Paul उसके लिए क्योंकि पौलुस की वजह से, was willing to share his greatest treasure. क्योंकि पौलुस तैयार था उसके सबसे बड़े खजाने के बारे में उसको Wow, बांटने so के लिए। beautiful. और कितना खूबसूरत है ये। Paul, thank पौलुस, you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। 30 years later, 30 वर्ष बाद भी Paul is writing पौलुस लिख रहा है to the Philippine people. फिलिपियन के लोगों से, And he's writing from Rome in a jail. और रोम से, कल जहाँ पे जेल में वहां से लिख रहा है वो। And I love this scene. और मुझे अच्छा लगता है Just दृश्य। think for a moment. सोचो उसके बारे में। Paul is on a house arrest. सोचो घर के अंदर उसको बंद करके रखा हुआ He's है standing on a trial to Caesar. और सीजर के सामने उसको खड़ा होना है एक दिन। This trial may end in his death, और execution, इसके बाद उसकी शायद उसको मार दिया जाएगा or he will be released. He doesn't know. या उसको छोड़ दिया जाएगा, उसे पता नहीं है। He's in a house arrest. He's chained to a guard. और उसको जब जहाँ बंद किया हुआ उसको चेन से बांधा हुआ है वहाँ पे। And every 4 hours, the Praetorian guards are going to be shifted. और हर 4 घंटे के बाद जो सैनिक है वो बदल दिए जाएंगे। And here's Paul. और यहाँ पर पॉल है। The Praetorian guards, by the way, और जो प्रेटोरियन की जो सैनिक थे वहाँ पे उस वक्त, they are the elite commandos of the Roman army. और रोमियो की जो सेना थी उसके मतलब सबसे अच्छे लोग थे वो सब। They were the guys who guarded Rome, Caesar's households. जो समझो सीजर के का घर की रक्षा करते थे। I don't know बहुत why अच्छे थे। God put them in Paul's cell, पता नहीं कि वहाँ पर परमेश्वर ने उसको पौलुस के वहाँ पे क्यों डाल but he दिया, did. लेकिन डाल दिया वहाँ पे उनको God साथ। brought these men right into Paul's cell. और उन लोगों को सीधा पौलुस के पास ले आया परमेश्वर। Maybe there was extra of them and they didn't have enough work to do. और शायद क्योंकि वो बहुत से थे और उनके ज्यादा काम नहीं था, But then they are with this missionary that God puts in. लेकिन वहाँ पर है वो उस मिशनरी के संग। And every 4 hours there's a man who's chained to Paul. और हर 4 घंटे के बाद एक और आदमी रहेगा जिसको पौल के संग बांध दिया जाएगा। Talking about a captive audience. जैसे मानो कि उसको वहीं पे बंदी बना Wow, दिया। that's awesome. और कितना अच्छा है वो। And I love Paul. I don't know what happened, but I'll tell you what happened. मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि क्या हुआ। Paul is not thinking about his jail sentence.
He's not thinking about anything else. पौलुस और कोई चीज के बारे में सोच रहा नहीं है। He's thinking about pouring his life into these वो precious सिर्फ ये कह रहा है कि souls. इनके सैनिकों के साथ मैं अपना जीवन को How बता दूं। different is Paul? कितना अलग है पौलुस। Man, I love this man. और मुझे अच्छा लगता है ये I want इंसान। to be like this man. मुझे इसकी तरह बनना है। I want you to be like this मैं man. चाहता हूँ कि आप उसकी तरह I बनो। want you to preach like him. मैं चाहता हूँ कि आप उसकी तरह I प्रचार want you to करो। be fervent for souls like him. मैं चाहता हूँ कि आप प्राणों के पीछे, लोगों के And बीच this is जाओ what इस तरह Paul से। did. और इसी तरह से पौल ने किया। This is a conversation I can tell you it happened. और ये इस तरह से बातचीत हुई होगी। Paul goes to this man. So, you're part of the Praetorian Guard, huh? और पौलुस शायद उनको पूछता होगा, तो प्रेटोरिया की सेना से हो तुम? Must be a little hard to be away from your family so long, तुम्हारे huh? परिवार से बहुत दूर हो, अच्छा बहुत तकलीफ होती होगी। Yeah, it is. और कहते होंगे हाँ शायद है, तकलीफ होती है। But these guys, you guys are really the top crack unit of Rome, aren't you? और कहते होंगे तुम सबसे अच्छे सैनिक हो यहाँ के। Yes, we are. और कहते होंगे हाँ हम हैं। And he makes friends with them. और उनसे दोस्ती कर लेगा वो। Talks about the family. उनके परिवार के बारे में बात करके। And after a couple of hours, और कुछ समय के बाद the guy says, so what about you? तो वो कहेगा हाँ तुम्हारे बारे में क्या सैनिक? Why are you here? कि तुम यहाँ पर क्यों हो? And Paul says, I was hoping you'd ask. और पौलुस कहेगा कि अच्छा लगा मुझे कि पूछ रहे हो मुझसे। I am here for the hope of Israel. मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि इजराइल की आशा की वजह से। I am an ambassador of the living God in chains. एक जीवित परमेश्वर के जैसे यहाँ पे राजदूत हूँ। Let me tell you who I was. बताता हूँ मैं तुमको मैं कौन Let me हूँ। tell you what I did. बताता हूँ मैं क्या किया। I was traveling. I was all these things and persecuting the Christians. मैं इन विश्वासियों के पीछे जाके इनको सताव कर रहा था। And one day, I kid you not, as God is my witness, I was traveling, and on the road of Damascus, I met Jesus. और मैं तुमसे मजाक नहीं करता, जब मैं दमास्कस की ओर जा रहा था तो मैंने रास्ते में परमेश्वर यीशु मसीह को पाया। And within 2 hours, और 2 घंटे में Paul shared the gospel with this man. पौलुस ने सैनिक के संग सुसमाचार Became बांट his लिया। friend. And next guard came in. और फिर अगला सैनिक आया। How are you doing? और उसको फिर वही सवाल पूछा, कैसा है तू? It must be hard to be a Praetorian guard, huh? कि सैनिक होना बहुत मुश्किल होता होगा तेरे लिए। Do you understand? समझ रहे हो? Man, it's so easy. कितना आसान है। When Jesus becomes your greatest treasure, और यीशु आपका सबसे बड़ा खजाना बन जाता है। talking about him just flows. और उसके बारे में बात करना सिर्फ अपने मुंह से निकलता ही रहता है। It's not hard to talk about मुश्किल someone. नहीं है उसके बारे में बात करना जिससे हम प्रेम करते हैं। That's what we need to do वही हमें करना है when Christ becomes the greatest treasure. कि मसीह हमारा सबसे बड़ा खजाना बन जाता है। I love this last part tonight. We'll cover it next week. और ये आखिरी पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में हम और विस्तार में अगले हफ्ते जाएंगे। In Philippians chapter 2. फिलिप्पी के I दूसरे just अध्याय read में it for you so सिर्फ पढ़ लूंगा मैं think आपके about लिए, it. आप उसके बारे में फिर सोच सकते हो। When Christ becomes your greatest desire, जब यीशु आपका सबसे बड़ा then you desire unity in the body of Christ. तो आपकी इच्छा होती है कि एकता हो Then परमेश्वर you के में, want unity in the family of God always. कि परमेश्वर के परिवार में एकता बनी रहे। This is what Paul says और ये पौलुस कहता है in chapter 2, verse 1. दूसरे अध्याय पहली पंक्ति में फिलिप्पियों का, याद Since there is great comfort in Jesus. यदि मसीह में कुछ शांति है, It's not if there is, it's since there is. तो वहाँ पे अंत में है क्योंकि मसीह में In the शांति Greek, है। it's a first-class conditional. यूनानी में वहाँ पर पहली चीज लिखी हुई है कि वो So it means since there is comfort क्योंकि in वहाँ पर Christ, मसीह में शांति है since there is a great consolation of His love, और प्रेम का धाड़स है since there is fellowship of the Spirit और and आत्मा की affection and सहभागिता है compassion, और कुछ करुणा और दया है। Paul says, make my joy complete, पौलुस कहता है तो मेरा ये आनंद पूरा करो brothers, भाइयों sisters, बहनों, by being of the same mind, एक मन के रहो maintaining the same love, और एक ही प्रेम हो, united in spirit, एक ही चित्त intent on one purpose. और एक ही मन सा रखो। That's the gospel. और ये सुसमाचार Do nothing from selfish conceit, विरोध या झूठी बनाई से कुछ ना करो, but with humility पर दीनता से of mind, एक दूसरे को regard one another एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, as more important than yourselves. एक दूसरे से अपने को अच्छा समझो। Wow. When Christ is your greatest desire, जब परमेश्वर यीशु आपकी सबसे बड़ी इच्छा बन जाए, you just want आप सिर्फ यही चाहोगे that the family of God will always go forward कि परमेश्वर का परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे to glorify Him. ताकि उसकी महिमा। It's not about us. ये हमारे बारे में नहीं। Friends, in 50 years we won't be on this earth. 250 वर्षों में हम इस धरती If पर नहीं होंगे। Jesus doesn't come back in 50 years, अगर 50 वर्षों तक भी यीशु वापस नहीं there's आया, another generation of people who will take up the baton from us. कुछ और लोग आएंगे और वो हम इस दौड़ को आगे दौड़ेंगे।
It's not about us. ये हमारे बारे में नहीं है, It's about Christ. यीशु के बारे में। If Christ is our greatest treasure, अगर यीशु हमारा सबसे बड़ा खजाना we है, lift him up. हम उसको ऊंचा उठाएंगे We love to magnify him. और उसके बारे में बात करें। Then we say, yes, Lord. तब हम कहेंगे, हाँ परमेश्वर, Who have I in heaven कौन है मेरा स्वर्ग में, but you? लेकिन तू। And we say, oh God, और कहेंगे, अब हे परमेश्वर, let me burn for you. मुझे तेरे लिए जलने दे, Let me be your fuel, oh God. तू मेरे को बढ़ा दे। Christ is my greatest treasure. और अगर यीशु मेरा सबसे बड़ा खजाना है Then I speak about him. तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। That's a beautiful thing. और एक खूबसूरत चीज है, It comes normally. जो भी है। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। We love you, Jesus. हम तुझसे प्रेम करते हैं Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा। Just sit in your seat for a few minutes. जहाँ पर आप हो वहीं पे बैठे रहो थोड़ी What do you देर। think about that? मैं चाहता हूँ कि आप सोचो इसके Just बारे think में। about that. सोचिए इसके बारे में। Is it wrong that you have chosen to live your life the way you do? क्या ये गलत है कि आपने चुना है जो जीवन जीने के Would you want to लिए? change anything around? क्या आप कुछ बदलना चाहते हो? Have you really thought about eternity? जो आपने सोचा अनंत जीवन के बारे में? Paul said, for me to live, और उसने कहा मेरे जीने के लिए, if for me to live is Christ, मेरे जीवन मेरा जीने के लिए यीशु है, and to die और मरना is gain. मैं कुछ प्राप्त कर लूंगा। The Greek doesn't say just gain. यूनानी में सिर्फ प्राप्त करना नहीं लिखा है, It says to die is much better, far better. और इसमें लिखा है कि अगर मैं मरूं तो ज्यादा अच्छा होगा। Wow. कितनी अच्छी बात है, Much better, बहुत अच्छा far होगा, better. बहुत अच्छा होगा। If I live for money, अगर मैं पैसे के लिए जीऊंगा I'll always fear losing it, और मुझे हमेशा डर लगता रहेगा कि मैं खो दूंगा उसे and I'll leave it behind one day. और मैं एक दिन उसको छोड़ जाऊंगा पीछे। If I want fame for myself, और अगर मैं नाम चाहता हूँ मेरा, even as a Christian, एक विश्वासी होने के बावजूद भी, guess what? I'll always be competitive. ये याद रख ले, मैं हमेशा लड़ाई करता रहूंगा And आगे then I बढ़ने have के to लिए, always be looking for somebody who's going to upstage me. और मैं उसको ढूंढता रहूंगा जो मुझे शायद हरा ना दे, And that's not right. और वो सही नहीं है। If I look for possessions, और अगर मैं चीजों के बारे में ध्यान देता रहूंगा then I leave it all behind तो one मैं day. सबको वैसे ही सब पीछे छोड़ And I will जाऊंगा, find that enough is never enough. और मुझे पता चल जाएगा कि कभी भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट Because I नहीं can होऊंगा। never satisfy the desires, the cravings of the lust of man. और जो मेरे अंदर भावना है उसको मैं कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। But if I find Jesus, लेकिन अगर मैं यीशु को प्राप्त if करूं, Jesus is my greatest treasure, अगर यीशु मेरा सबसे बड़ा खजाना है, then I've found the greatest thing. तो मैंने प्राप्त ढूंढ लिया है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे Think जीवन में। about it tonight. सोचिए उसके बारे में। Just make Christ the best and most important thing you have ever. Say that many times. You're my treasure. You're my treasure, God. और यीशु मसीह को अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना बनाओ, और बार बार कहते रहो कि तू मेरा खजाना है परमेश्वर, तू मेरा खजाना है। Thank you. Thank you. धन्यवाद हो परमेश्वर का, Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर। I'll wake to see your likeness. एक दिन मैं उठ के देखूंगा, I will see your face. एक दिन तेरा मुंह We देखूंगा, will walk forever in heaven. हम साथ में चलेंगे हमेशा स्वर्ग You में। are my treasure. आप मेरा खजाना हो, It doesn't matter who has what in this life. और किसके पास क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। You are my portion. आप मेरा हिस्सा हो, I have found you. मैंने तुझे पा लिया है। For me to die will be great gain. और मैं अगर मरूं भी तो Oh, मेरे for बहुत me बड़ी to सफलता die. होगी। If Christ, for me to live is Christ, अगर जीवन जीना मेरे लिए यीशु मसीह है, then death will only bring more of Him. तो मेरी मृत्यु के बाद और भी वो मुझे I'll मिलेगा, just be face to face with और Him. मैं उसके सामने सामने चेहरा सामने सामने And होगा। it's such great gain. और कितनी बड़ी प्राप्ति All होगी, the rewards that Jesus gives. और जो चीजें मुझे देगा वो, All the love that Christ जो gives. प्रेम मुझे देगा वो So much better. कितना अच्छा होगा। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Lord. धन्यवाद। We love you. हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। Amen. आमीन। Amen. Okay, we're going to close with a song.